हे गाइज, हम आ गए हैं। हिटमैन 3 खोल लिया हमने। और ये है, एक ही बंदा है वो, क्या नाम था इसका यार, एजेंट 47 और डेथ इन द फैमिली। हम सेकंड मिशन करने जा रहे हैं। डेथ इन द फैमिली स्टार्ट किया जाए, एंड ऑफ द लाइन। ओके, She came home. Carlyle's lost an empire. You fall hard enough, you tend to be reminded of what truly matters. So, the end of the line. You ready for this? Are you? Who will you be without a score to settle? I guess the world's most wanted fugitive will have to do. Alexa Carlyle is dead. According to the funeral invitation, that is. So naturally, it caused quite a stir when the late matriarch turned up at the breakfast table, alive and kicking. Carlyle, wisely sensing that her number is up, has emerged from exile to tie up loose ends and secure the Carlyle legacy. She may be a monster, but you have to admire her due diligence. Carlyle descends from an ancient line of warrior aristocrats. Her great-grandfather made a killing in the Second Opium War and established an empire in shipping, railroads, and newspaper publishing. While largely unknown to the public, the family still asserts its quiet dominance over global transport, आगे बोलूंगा। media, and technology. Most senior of the partners, Alexa Carlyle, is cold as ice, tough as nails, and sharp as a razor. Incidentally, it was her late father who first brought the three families together after the end of World War II at this very house, meaning that this gentleman is the birthplace of Providence. Birthplace of Providence। आ गए हम। Here, and it ends here. Talk about poetic. तो गाइस, एजेंट 47 और इसका दोस्त जो, बोलो आप बोलो। Case file on the Constant. Information that may be helpful in his recapture, so don't leave the estate without it. Right. Happy hunting, 47. See you Welcome. on the other side. क्या हो गया? ये टारगेट है और बैक हो जा। एक मिनट। और ये केस फाइल हमें फाइंड करके लानी है, चोरी करनी है, जो मर्जी हो। तो गाइस, ये जो एलेक्सा कालाय है, कालाय जो भी है इसका नाम, तो इसने अपनी फेक डेथ का नाटक किया है, लेकिन अभी जिंदा है। ये नहीं पता किस लिए किया है। वो एजेंट 47 इसको मारने जा रहा है और केस फाइल भी एक चोरी करके लानी है इनके यहाँ से। Grandson and daughter-in-law are all gathered to conduct Carlyle's sham funeral. Curiously, Carlyle summoned a famous London PI soon after arriving this morning, but his purpose at Thornbridge is yet unclear. Now, the target knows that you're coming, and her guard detail is top-notch. So Mr. Gray will secure their nearby field HQ and intercept all calls going in and out of the estate. Any appeal for backup is going to fall on very deaf ears. Good luck, gentlemen. तो गाइस, एजेंट 47 को यहाँ छोड़ दिया गया है और आगे हमारा काम है, एक ही है टारगेट। फाइंड द केस फाइल, एलिमिनेट Alexa. Phineas Whitmer, private investigator. I have an appointment with Madame Carlyle. Please wait. Mr. Whitmer is here to see Madame Carlyle. You can go right in. That is Phineas Whitmer, Okay. the famous private investigator hired by Madame Carlyle this morning. I'm curious why he's here. Maybe तो भाई, you should do some detecting yourself, 47. ये जो इन्वेस्टिगेटर है, ये एलेक्सा ने हायर किया है सुबह सुबह। जी हाँ, अभी अभी सुबह सुबह। ये नहीं पता किस लिए हायर किया है, लेकिन हम शायद इसका भेस बदल कर अंदर घुस सकते हैं, या अंदर घुसकर इसका भेस बदल सकते हैं। जो भी होगा देखें जाएगी, आया करेंगे।
घुस जा अंदर, बाकी अंदर चल के देखेंगे क्या करना है। आजा भाई, क्या कर रहा है? सोच में पड़ गया क्या? Mr. Whitmer, thank God you're here. Can I take you to Madame Carlyle? Please do. If you'd follow me. चल भाई चल, I oughtn't to say anything, but बोलना पड़ रहा है यार, अपने आप नहीं जाता है, क्या चक्कर है? strange. Preparing for Madame's funeral and then she turns up alive. But then the awful business with her brother Zachary. And all this security. I've never seen the place guarded like this, and I dare say I don't like it at all. ये तो अंदर जा रहे हैं यार, told Kate about his death. कैसे जाऊं मैं? She just thanked me, said she understood the position I was in. We had a really good talk about it, actually. What did I tell you? She's a sensible. मैडम जी थोड़ा आंखें उधर उधर करिए। That's a bit I excessive, know. I think, considering the fact that I spotted no less than 2 routes. मैं भी बेशर्म हूँ, यहीं से जा रहा हूँ, बार 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 बार। अब की बार हम इसके अंदर छुप जाएंगे, पहले ही देखी जाएगी जो होगा। बधाई हो दोस्तों। जी हाँ, ये क्या पड़ा है? Great tragedy has fallen upon us, and I need a quick resolution, handled with absolute discretion. Results and discretion are my बोल रहा हमें। Very well. I suppose you will want to start at the crime scene. In my experience, a thorough examination of a potential crime scene is half the job done. Good. Fernsby will take over from here. ओके, I am Mr. Fernsby, the butler. बटलर। Madam Carlyle has asked me to assist you in any way possible. ठीक है बटलर जी। I understand that you've travelled from London. Would you care for some refreshments? Or do you No. prefer to go straight to Mr. Zachary's sleeping quarters? सीधा चलो काम पे। I prefer to get started. As you wish. If you'll follow me, sir. चलो भाई, इन्वेस्टिगेटर की तरह आए थे, इन्वेस्टिगेटर की तरह काम करेंगे और फटाफट इस बूढ़ी औरत को उड़ा देंगे यहाँ से और केस फाइल उठा के ले जाएंगे। चल भाई बुढ़े अंकल तू भी। Obliged to point out that current affairs surrounding Madame Carlyle are of a delicate nature. You may be familiar with the recent announcement of her death. Hey, You'll probably learn that a staged funeral. बेकार है बेकार, तू बता क्या है? जल्दी आ जा भाई, जल्दी आ। Informed until this morning that their mother was in fact not dead at all. ओके, So please bear with them if they seem तो affected by the एलेक्सा ने अपनी मौत की situation. फेक न्यूज़ फैलाई है। I trust I do not need to remind you that there will be consequences if word gets out that Madame Carlyle. नहीं बताता भाई किसी को कि उसने I'll फेक consider डेथ करी her है। dead when I leave. कह रहा है भाई जब मैं यहाँ से जाऊँगा मैं मानूंगा कि वो मर चुकी है। I will tell you this. The case concerns the death of Mr. Zachary, Madame Carlyle's younger brother. He was found dead in his bed this morning. ओके, The door was locked from the inside, and a suicide letter was found in his room. ये रहा रूम भाई उसका। However, Madame Carlyle. चुप हो जा तू, जा यहाँ से, हम देख लेंगे बाकी क्या है। एक बंदा बाहर खड़ा है यार, इसके साथ क्या किया जाए? A locked room murder mystery, 47. I trust you'll get to the bottom of this. भैया मारना तो Why जरूरी है। don't you देखो use your camera to scan the dead body, 47? कर रहा हूँ दीदी, रुक जाओ। डेड बॉडी को स्कैन करना है और यहाँ पर वो पड़ा है एक लैपटॉप, वो भी स्कैन करेंगे। घुस जा पहले तो, इसको घुसाओ अंदर। बस अब मेरे को अपना काम करने दो।
गन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्या है? डॉक्यूमेंट्स, ये स्कैन नहीं हो रहे भाई। अच्छा उठाने हैं ये। Zachary's suicide note. Also, a sample of handwriting. It could be relevant to compare to other samples to establish its authenticity. लो जी बॉडी स्कैन कर दिया Throat markings और ये भी स्कैन कर दिया। short-lived plant poison killed him. Spread. ये पॉइजन था इसके अंदर। Death at around 10 o'clock last night. You do know 10 बजे के आसपास मरा है वो। क्या किया जाए? लैपटॉप स्कैन कर देते हैं। Zachary was shopping for new Wellingtons last night. Not exactly what you would expect from someone suicidal. भाई वो जूते ढूंढ रहा था किसी तरह के, मतलब शॉप कर रहा था। ये बुक है यहाँ पे किसी चीज़ की। मुझे कुछ अजीबोगरीब लग रहा है। ये बुक के साथ कुछ और ही होएगा यहाँ पे। ओए शाबाश। It's a secret passage. This ये could क्या है? explain how the door was locked from the inside. ओहो, नजर रखने के लिए। शाबाश। एक और है। ये नजर क्यों रखते हैं ये सीक्रेट डोर किसी को पता नहीं होता या सिर्फ इन्हीं को पता होता? क्या बोल दिया ये? You've likely not exhausted the room for clues, 47. ओए इतना खतरनाक ये सिक्योरिटी रूम। ये क्या है? अरे ये रह गया था। A photocopy of the floor plans. अच्छा Somebody's been फ्लोर का। researching the secret ins and outs of Thornbridge Manor. I believe you've done a thorough search of the crime scene, 47. Maybe it's time to see the butler. I'm curious about the information he's prepared for you. अब चलते हैं बटलर पे दोबारा। मैं पहले ही चला गया था। बटलर चाचा बटलर। बटलर कहाँ है तू? ये रहा बटलर। बटलर भी है, बटलर भी है। Mr. Fernsby, I'm done with the crime scene. Did you establish a time of death? Yes. Zachary died around 10 o'clock last night. 10 बजे मरा था दोस्तों वो। Staff were off duty, and Madame Carlyle and her security didn't arrive until this morning. That leaves Madame's family and myself as the only persons here when he died. And before you ask, no, I do not have an alibi. I was alone in my office at the time of death. Here's the material that I prepared for you. It's a list of the possible suspects and their quarters. Okay. Hopefully that will help you keep track of your findings. Please come and see me when you've solved the case, and I will take you to Madame Carlyle. Mr. Fernsby? Mr. Whitmer, you have enough evidence to present your case for Madame Carlyle? No, not yet. Come and see me when you do. So how does one solve a murder mystery, 47? Motive, means, and opportunity, I believe. May I suggest you ask the suspects for alibis? Or perhaps do you prefer searching the manor for clues first? बताऊंगा। तो गाइस ये कह रही है कि यहाँ के जितने भी लोग हैं वहाँ से इनके फैमिली मेंबर से पूछना पड़ेगा हमें, उन पर शक ना हो इसलिए। Just remembered I went for a stroll. Patrick Didn't you wash Carlyle. his car twice? Can you tell me where you were yesterday evening? Do a very good job. इससे पूछ लेते हैं। Sneaky butler, isn't it? He ratted me out. Elaine, give us some privacy, would you? भाई सीधी बात बताओ। Okay. She's really tense these days, and the last thing I need is more hassle. Okay. I took that pretty blonde, Rosie, for an evening stroll. I mean, how the fuck am I expected to cope for an entire weekend in this shithole? I'm bored out of my mind. If that's all, I think I'll get back to my slow death by boredom. Okay, okay. What और did you think of Zachary? Creepy as hell. No ambition. Imagine deciding to live in a museum. You know, Father says Zachary and Alexia used to be two of a kind. He had a great future ahead of him. Then suddenly, he just gave up everything. What an idiot. Thank God Daddy chose looks and brains over pedigree when he married Mummy.
I don't have to worry about the inbreeding so customary in these circles. So, is that it? Did you see anything suspicious last night? क्या करना पड़ रहा है, गेम खेलने आया था मैं. I reckon Zachary tops himself. I know I would have. Or perhaps Mr. Fernsby. I don't like him. He could have done it. तो भाई इस पागल बच्चे को कुछ नहीं पता. Just remembered I went for a stroll behind the greenhouse last night. Maybe that's where it is. किसी और पे चलते हैं पूछने अब. यहाँ सीढ़ियाँ किस लिए हैं रे? क्या कर रहे हैं? That door leads to Emma and Gregory's room. अरे ये वाला था. Like him, or do I like the fact he's not another knuckle ये dragon? झाड़ू कहाँ से आ गया? ये डोर लॉक है. नहीं कुछ नहीं है. इस डोर के पीछे जाना. डोर के पीछे नहीं जाना. चलो चेक करते हैं डोर में क्या छुपा है. इन्वेस्टिगेटर नाश मार दिया मेरे गेम का तुमने. यहाँ पर हमने कुछ ढूंढना है और उसके बाद चलेंगे. अब यार कत्ल नहीं कर पा रहा हूँ मैं. बाकी सब कर लिया. 2 ही बंदे मारे हैं अभी तक. आ गए गाइस. डोर अंदर से लॉक था और हम भी शक्तिमान ठहरे. हम कहीं ना कहीं से तो आएंगे ही. ये क्या पड़ा है? A key Chabi. pendant for the greenhouse. What's that doing in Emma and Gregory's room, I wonder? And why is the key missing? Now this is interesting, 47. क्या A है? letter from Emma's mother stating that Emma is the illegitimate child of Alexa's late older brother, Montgomery. ओके. And listen to this. She claims to have witnessed नीचे Alexa पड़ा है and कुछ. ये Zachary क्या पड़ा है? murder him. ओ हो. ये किसके सैंडल है? कुछ तो गड़बड़ है. सैंडल किसके थे भाई? बता तो दे दीदी. ये नहीं बता रही भाई. ये ये फिर लग गया यार इसमें ही. अब कहाँ जाया जाए? मारना नहीं है. नहीं दूसरे फैमिली मेंबर्स कहाँ मिलेंगे यार इनके? लहू पी लिया मेरा. यहाँ तो जा चुके हैं हम. ऊपर जाएं क्या? I'm really sorry, sir. Unfortunately, I'm not allowed to let you pass. ये जाने नहीं दे रहा ऊपर. You know. Asshole. You'll never come through here as long as I'm alive. Now get the fuck out of my face. कौन लड़ रहा है ये? I'm really sorry. ये कुछ और है. यहाँ नहीं जाते. कहाँ जाया जाए भाई? नीचे चलो यार. पहले तो इनसे बात करते हैं. ये बैठे हुए हैं ये जानवर नीचे. तुम्हें काम नहीं है कोई? चल बे चल यहाँ से. लग जाते हैं सुबह सुबह बात करने में. बताओ इससे तो बात हो गई. बाकी कौन थे यार? वो किधर जाएं? ये तो बाहर आ गए. यहाँ पे क्या करना है? She's insistent, that one. She kept asking all kinds of questions. Who had the other one? Why I gave it to her, that sort of thing. You did make sure she didn't see you give the other one to the butler? Oh, of course. According to the bodyguard, Rebecca
Carlyle and Mr. Francis with the butler have each been given a token for the Milton. क्या है ये? क्या करूं मैं इसका? इससे पूछा जाए। अरे रुक जाओ दीदी, बताओ। Can you tell me where you were yesterday evening? Surely I'm not a suspect. I need to. जो पूछा है उतना बता दीदी। Well, I spent the evening with my family, but I got an awful migraine. बूढ़े हो गए हम ये मिशन पूरा करते करते। I believe I went up when the अब मानिए दोस्तों, लास्ट में जब मारेंगे ना उन्हें, मैडम को बहुत बुरी तरह मारूंगा। How did you feel about Zachary? I might as well be honest. His presence was always awkward. But how do you have a meaningful conversation with a man who only cares about plants? In my opinion, Alexa bears some responsibility for how this ended. She supported his self-limiting behavior by letting him live here. Anything else you want to know? Have you noticed anything else out of the ordinary? Nothing special comes to mind. Except, perhaps, I did get a feeling that Zachary was depressed, not just sad. I suppose he realized that he had no one with Alexa gone. Even Alexa must feel the pangs of guilt over that one, letting him believe she was dead. Then again, guilt isn't her strong suit. अब क्या बचा है? अभी इस अंकल से पूछो। Gregory Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? Oh, you're wondering about my alibi, Mr. Detective? Yes. Well, I left Thornbridge around 8:30 for a pint with Edward. I wish I hadn't. Quiz night at the inn. On the other hand, staying here with Zachary, my obnoxious sister, and the wife sporting another one of her headaches would have been a fate worse than death. The short of it, Okay. Zachary was very much alive when we left. Zachary जिंदा था जब ये इन्होंने यहाँ से छोड़ा। Just before midnight. Anything else you want to pry from my? बहुत कुछ पूछूंगा भैया अभी तो। Zachary के बारे में बताओ। Such a sad old sod. A bit heavy on the bottle, but who could blame him? Only company he had was his rare plants and mother, who travels more than she stays here. Honestly, I ये can't प्लांट्स say के बारे में क्यों बात कर रहे हैं बार बार? he's better off dead. Is there मुझे प्लांट्स पसंद थे क्या? नहीं भाई, और पूछूंगा मैं। Anything else you'd like to tell me? Nothing really. I'm just enjoying the show. Our perfect mother टीवी देख रहा है क्या ये? fucked up, didn't she? Faking her own death. You know, she's explained nothing to us. I think she's scared to own up to her own mistake. तो चलो जाए, आगे चलते हैं। घर के और कौन से कितने कोने बचे हैं? ये क्या है? ये तो वहीं आगे, ये एक और जगह है। ये भी है शायद इस घर की वो Rebecca Carlyle, can you tell member। me about yesterday evening? We don't really see much of each other, my brothers and I. I suppose it takes our mother's funeral to bring us together, and even then, it's not like we sit on each other's laps. Now, Okay. let's see. Patrick, Gregory's son, disappeared straight after dinner. अच्छा, I think he might be in some sort of trouble. Edward पैट्रिक wanted खाना to खाने के go, बाद but Gregory निकल लिया था बीच में stayed से। for a few drinks before they went off for a pint at the local at 8:45. Guys, I swear Gregory enjoys मुझे पता है आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। I had a conference call with my New York office at 9, so I spent 3 hours on my laptop in my room and went straight to bed afterwards. I don't know about Emma. She did act a bit strange. सब एक दूसरे का नाम क्यों ले रहे हैं? She was making क्या lists for दिक्कत है दोस्तों? changes needing to be done. कुछ तो गड़बड़ है। She gets her hands on Thornbridge Manor. Quite the shock she had when Mother arrived during breakfast. Is that everything, Mr. Whitmer? नो, और भी पूछूंगा मैं। Zachary, did he act strange last night? You know, now you mention it, he was a lot more chatty than usual. He wanted अच्छा। to know about my connections in the publishing business. Apparently, a friend of his is writing a book. Okay. It strikes me as very peculiar. I didn't think he had any friends. और बताया जाए। You feel like mentioning? I may be wrong, but I saw Mr. Fernsby, the butler, leave Zachary's room early this afternoon. And he seemed a bit startled when he saw me in the hallway. It's probably nothing. Oh, and one more thing.
बताओ Please क्या? be kind to Edward. He can only take so much. एडवर्ड से हम Is that everything, काइंड क्यों Mr. रहे? Smith? और बताया जाए थोड़ा बहुत। See to. जाओ, माफ किया तुम्हें। डॉक्यूमेंट स्कैन किए जाएं, कर लिए। और क्या किया जाए? वो क्या है? How did that happen? ये भी तो रह रहा है शायद। है कौन है ये जानवर? Professor Edward Carlyle, can you tell me your whereabouts for last night? Oh, yes, this. फंस गया। With Zachary. I stay at the local inn. You see, I prefer not to spend the night here at Thornbridge Manor. ओके। My brother Gregory came along for a nightcap. He'll never admit it, but I think he understands that I find this whole thing upsetting. इतना डर काहे रहे हो? Some comfort. कांप काहे रहे हो? I believe we went to the Stag's Head around 8:30. If that's ओके। all, नहीं नहीं नहीं, Can you अभी tell me बहुत about कुछ पूछना है। Zachary's behavior last night? बिहेवियर बिहेवियर बिहेवियर। Suicide. Sure, he was upset by Mother's supposed death. But he seemed more engaged than usual. ओके। You should ask Rebecca. They had a long talk. रेबेका। Did you know रेबेका he कौन hadn't थी? left Thornbridge Manor in nearly 50 years? His पता नहीं यार, plans, नाम भी नहीं याद मुझे तो। his staff, all the company he had. Anything else I can do to help? और भी। Notice anything else out of the ordinary? You mean apart from the fact that we came here to bury our mother and she shows up alive and kicking? Zachary found dead in his bed this morning? Or perhaps that the planned funeral is still taking place and I have to do the eulogy? And Mother will surely have a strong opinion on it afterwards. I can't breathe. Excuse me. यहाँ पर और कुछ भी है शायद। ये रहा। Yes, hi Cassie, it's me again, Edward. I know I'm not. और क्या बचा है? कुछ तो बचा होगा। दोबारा चलते हैं इस पे ही। How are things coming along inside? Rosie, tell me what you did last night. I'm in trouble, aren't I? I पागल आदमी। spent the evening with Patrick. We met after dinner and I went home at 1 in the morning. ओके। He said he needed someone real to talk to. When he looks at you, it makes you feel like the center of the universe. वो भाई किसी से बात करना चाहता तो इससे बात करी थी उसने। और बताओ दीदी, चुप नहीं हो ना? Well, he's under a lot of pressure. He's an idiot. That's what he is. Did you notice anything out of the ordinary? Any strangers outside the house? No, we saw no one outside. बेचारा कातिल। Except Patrick's mother. इन्वेस्टिगेटर बना के छोड़ They दिया were उसको। sitting on the bench behind the greenhouse talking when she came out and ग्रीन हाउस कहाँ पर है ये? ग्रीन हाउस के वहाँ बात कर रहे थे। she'd insist Madame Carlyle fire me. I'm sure of it. Too Okay. right she will. She's always going on about how things will change once she's in charge of Thornbridge Manor. ओके, बस अब मैं कोई गलती नहीं करूँगा, मेरे को जाने दो। Groceries arrived. I heard some of the delivery people were unhappy with the security at the gate. सॉरी 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 दीदी। क्या बचा है और? अच्छा, गाने सुन रहे हैं बच्चे। अब कैमरामैन को कैसे चेंज किया जाए? दूर से गोली चलानी पड़ेगी मेरे को लग रहा है। Rosie told me Rebecca has a really cool saying though. When I was that age, it was every bit as bad. The only real difference is the culture around it. That and the fact that every public figure has to expect their life will be catalogued by them. आ रहा है वो। रेडियो बंद करने। क्या मारा जाए उसके? ये उठा के मार दूंगा। My boyfriend has a restraining order. I think it might be him. Could you go see if it's him? Yes, oh god. Hey, we got a person here who needs some assistance. I have no idea what happened, but it does not look good.
अबे यार ये कहाँ से आ गया? Okay, good. Not dead. But in my... You just can't accept anything at face value anymore. Everyone's got an angle, and if it looks like it could, कोई नहीं देख रहा। यहाँ पे छुपाओ इसको फटाफट। बधाई हो। वहां पर जाना है, क्या है वहां पर? इंसर्ट फ्यूज सेल, ले लगा दिया फ्यूज। खींच देते हैं तेरी पिक्चर भी यार, खींच दी ले पिक्चर। और बता क्या चाहिए? It works. I'm ready for the shoot. Perfect. I'll call the family down now then. बुलाओ जल्दी बुलाओ फैमिली को। Wait for the staff member to text down the Carlyle family. Madam Carlyle is on her way down for the family photo shoot. Okay. See if any memorable moments will play out in front of the camera. I have a lot to see to today. I'll do my best. फोटो खींची जाए। चलो जी, 1 मिनट आने तो दो फ्रेम में सबको। Everyone, I understand that you have a lot of questions. Please be patient for a little longer. I will address you in the sitting room afterwards. Right, get in position. चलो मैडम जी। इन सब की फोटो लेते लेते शायद कुछ ऐसा हो। Chin up, Edward. No one wants to look at that long face. You're such an idiot, Gregory. I'm fine, Rebecca. इधर देखो इधर। You look like a nervous wreck. चलो ठीक है। That will be enough. No need to spend the entire day here. Please, everybody, go to the sitting room. I need to speak. यार वो बिजली तो लगी नहीं इसको मैडम को। I want to stress that I expect absolute discretion about everything you Would you like some help writing No the one eulogy will tomorrow? ever know I was here. I can draw something up in 15 minutes. Are you coming, Mummy? I just need some fresh air. I must do it on I'll be in shortly. You go in. Gregory is going out of his way. Not clever with his laziness and neglect. And you need to self-destruct in your attempt to please her. She's equally hard on the two of you, don't you see? French Doesn't make any Revolution. difference how you behave. This is how it starts. Wish I could just shake some sense into you, all of you. मैडम के मारना है यार, इसके नहीं मारना। That's it. One foot in front of the other. Goodbye forever. यार फोटो खींचनी थी, फोटो खिंचवाने के लिए बुलाया था क्या मेरे को यहाँ पे? बस इतनी बेइज्जती कर रहे हो तुम। कपड़े बदल लिए जाएं दोबारा। शक्तिमान। भाई मैडम को मारूंगा बड़ी गंदी तरह मैं, मेरा टाइम खराब कराया है उसने। ऊपर जाया जाए रे। अरे मैडम जी 1 मिनट। मैडम जी 2 मिनट रुक जाओ बस। सीढ़ियाँ कहाँ पर हैं? कहाँ हैं सीढ़ियाँ? ये रही। कसम से मैडम जी उड़ा दूँ आपको मैं। That is the door to Rebecca's room.
एक मिनट, यहाँ नहीं है यार मैडम, या यहीं पे है, उस साइड है मैडम, उधर वाले होल में। हाँ ये वाला होल है। So please, do not disturb me with your petty concerns. You are all adults, and as part of the elite, you will eventually have to deal with difficult situations like this. कोई खड़ा तो नहीं है ना यहाँ? अभी तक तो कोई नहीं है। गन निकाल ली जाए। That will be all. That's Madame Carlyle taken care of. Time to get the file on Arthur Edwards. मिशन स्टोरी गाइड अपडेटेड। भाई हमने क्या किया था? हम तो पागल हैं। अब मुझे शायद ऊपर जाना पड़ेगा, जहाँ पर वो मैम का रूम था। जी हाँ, मैम क्यों कह रहा हूँ मैं उसे। सर्चिंग चल रही है मेरी। रहने तो नीचे नहीं जाएंगे। बैठ जा भाई, खड़ा हो जा। ये तो सारा, ये क्या है? मिसिंग प्रोपेन फ्लास्क। यहाँ तो आ चुके हम। वो मैम की लाश उठा के लेके जा रहा है। चलो ऊपर जाया जाए यार, बहुत टाइम हो गया। Sorry, no private eyes here, Mr. Falcone. Bye-bye. That's it. Drop you. हमने क्या किया है भैया? हम तो शरीफ आदमी हैं। ये क्या है? इतना बड़ा बाथरूम? इतना बड़ा तो घर होता है यहाँ पे। Not that I saw. All I can think about is those swollen eyes. Hello, this is Cassandra Cox, Edward's ex-wife. I don't know what's going on at your house, but Edward is losing it again. He seems to believe that Alexa has come back from the dead, and that he has to write the make-believe funeral event. I still have the restraining order on him, so whoever gets this message now that Alexa is dead better get him under control. Otherwise, I see no other way than to get the police involved. एक ही सोल्जर रह गया यहाँ पर। बाहर जाके पहले इन दो सोल्जरों को निपटाया जाए। मैम का रूम है यहाँ। गन कहाँ है मेरी? महंगे वाली गन। हाँ, इसको रीलोड करके
कितने सिक्योरिटी गार्ड थे? 3 ही थे क्या? बहुत थे। खड़ा हो जा भाई तू, कोई काम नहीं है ऐसा। लेटर ओपनर, इसको चलाकर क्या फायदा है? ये क्या पड़ा है? ये तो गन है, ये किसी काम की नहीं है। ये भी नहीं, नहीं 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 नहीं। ऊपर जाकर देखते हैं क्या है। शॉटगन, कुछ भी नहीं है यार यहाँ तो। केस फाइल कहाँ मिलेगी मुझे? ये क्या था? केस फाइल चाहिए मेरे को, केस फाइल। ये क्या है? 1 मिनट, कुछ है यहाँ पर। फाइंड द केस फाइल है, एक्टिवेट। Peculiar icons above the safe. I wonder if they might be some sort of a code. Maybe have a look around the office, 47. ऑफिस में ही ढूंढा जाए कोई कोड। अब कौन ढूंढने में जिंदगी निकाल दूंगा मैं। तो भाइयों कोड पता कर लिया है मैंने अभी अभी। इसका कोड है 1975 1975। और ये खुल गया, केस फाइल हमने उठा लिया है। एग्जिट किया जाए जल्दी से यहाँ से। Well done, 47. ये क्या हुआ? कोई पहचान तो नहीं सकता मेरे को। Hello, sir. हेलो बेटा, हमने तुम्हारी मैडम को मार दिया अभी अभी। एग्जिट कहाँ पर है? एग्जिट हो रहा है यार। चल भाई फटाफट 47। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। चल भाई चल। मैं सोच रहा हूँ फ्रंट गेट से ना जाया जाए तो ही ठीक रहेगा हमारे लिए। 47, ये क्या है? ब्रिक। यहीं से घुसे थे ना हम। ये ट्यूनिंग इतनी खतरनाक क्यों हो रही है? भागो बेटा भागो। ओ, ये तो वही फ्रेंड था हमारा। जल्दी चल यार 47, इतनी तेज नहीं भागना। कर ले अपने बुल्ट स्टार्ट और भाग ले यहाँ से। 47 भाग चुका है दोस्तों और हम नीचे घुस चुके हैं। यू ओ हिम नथिंग। किसको ओ किया है हमने? इतने लोग क्यों मारे गए हैं भाई? डोंट रिस्पॉन्ड, जस्ट लिसन। वाई? डायना हमारी हेल्प नहीं कर सकती दोस्तों यार, लेकिन क्यों? ऐसा क्यों? डायना, And then there were none. Thank you, Miss Burnwood. Now, it's my turn. ये क्या हो रहा है? तो भाइयों डायना पकड़ी गई। ओ, ये हमारे फ्रेंड के साथ क्या हो गया? इसको, अच्छा यही कह रहा था जिसकी आवाज कट हो गई थी ना, बॉयस वांट्स यू लव। अच्छा बे तेरी, ऐसे क्यों लग रहा है एजेंट 47 है? Walk away. Or what? You gonna take us all on?
नहीं 47, गलती मत करना बेटा। Tell the constant to start running. वाह बेटे, हमें बचाने के लिए भाई खुद मर गया वो। You think you- डियाना भी पकड़ी गई। 47 is out there, and 47 never misses his mark. यस बेबी, Neither do you, Miss Burnwood. सबको मारेंगे। That's what makes you valuable. मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश हूँ। You think I would betray 47? Trust me, you owe him nothing. What is this? I told you we could help each other, and I meant it. I'll look forward to your call. अब क्या करवाएगा ये? बेचारा 47 मार दिया यार। ओ 47 का फ्रेंड मार दिया, मतलब हमारा फ्रेंड मार दिया। Gray is gone. Go to Berlin and stay out of sight. अकेले रह गए अब हम। शायद डियाना भी हमारा साथ ना दे अब। डियाना का पता नहीं, अब अगले पार्ट में पता लगेगा कि क्या होगा। तो दोस्तों शायद आज का मिशन यहीं ख़त्म करते हुए मिलते हैं अपने अगले मिशन में। आज का मिशन थोड़ा बोरिंग लग रहा था, बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा था। कोई नहीं, अगला मिशन ज़रूर करेंगे। बाय, सब्सक्राइब कर दो यार।